whether it is 1 degree, 2 degree, or 3 degree, right? So now please tell me. I hope no one has problem in identifying 1 degree, 2 degree, or 3 degree. या फिर problem है किसी को? See, 1 degree is when OH is attached to a carbon, and this carbon is attached to only one carbon. Okay, 2 degrees what? 2 degrees when the OH is attached to a carbon, and this carbon is, if it is attached to only one carbon atom, it is what? 1 degree. If it is attached to 2 carbons, then it is 2 degree. If it is attached to 3 carbons, then it is 3 degree. Okay, guys. If OH is attached to carbon, OH attached होगा carbon को, उस carbon को देखिएगा. Okay, in which OH is attached. If that carbon is attached to one carbon, then it is 1 degree. 2 carbon, then it's 2 degree. 3 carbon, then it's 3 degree. Got it, guys? Yes or no? Please tell me. Answer कीजिए, please, guys. Yes, sir. Yes, okay. What about this one? Tell me, guys. 1 degree, 2 degree, or 3 degree? क्या ख्याल है? Sir, 1 degree. Anyone else with any other answer? No, it's 1 degree. Samiha, Wafia? 1 degree, sir. 1 degree. Wafia? 1 degree? ठीक है, चलिए. अच्छा, एलाइलिक के बारे में बता देते हैं एक सेकंड. What is allylic? We'll have OH. OH is connected to a carbon atom. If this carbon is connected to a carbon with double bond, okay, then it is known as what? Allylic. If you see something like this, OH bond connected to carbon. If this carbon is connected to any sp2, not sp2 exactly, but it is going to connect to any carbon double bond, then it is going to be what? Allylic. Got it? Yes or no? Please tell me. जैसे ये example Yes, देखते sir. हैं. Carbon, CH2 carbon, simple. It is connected to what? Double bonded carbon. ठीक है? This is what? Allylic. I hope now you can do the other cases. You have 6 questions. I think 5 minutes will be enough. So do we have to draw it in the notebook or can we just give the answers? Then you draw it. You have to draw it. मतलब 5 मिनट तो उसके लिए भी काफी होगा ना. एक मतलब ड्राइंग करने में कितना टाइम लगेगा? Samiha, any idea why Sara is not present? No, sir.
That second one is also an allylic, right? Samiha, second wala allylic bhi hai, correct? Yes, Oh, Samiha. I'm sorry. I didn't see that we have to identify allelic as well. Okay, no problem. Just see which one of them are allylic also. Okay. It seems correct. Others, please send the answer. Ahmed, Fatima, Razan, Wafia. Just one thing about this fourth one. This is an allylic for sure. Okay, but because this carbon double bond that is present here, it is within a benzene ring. It has another name which is known as benzylic. Okay, so I hope now all of you have understood what is benzylic also. Benzylic कुछ नहीं, allylic ही है. Allylic अगर आपको याद है तो it is allylic only. But if that carbon belongs to the benzene ring, then it is going to be benzylic. Okay. Fifth and sixth भी है Ahmed. There's fifth and sixth one also. What happened, Fatima? वाफिया आप लोगों ने रजान आंसर नहीं दिया आप लोगों ने अभी तक. Why you guys took so much time? Samiha sent the answer almost like 4 minutes before. Sara का समझ में आता. Sara was a bit late to join the class. And Samia also joined. Okay. Samia आप last class में थे? Yes, Samia. रिकॉर्डिंग देखा आपने सामिया? नहीं, 1 degree, 2 degree, only half. Okay. Yeah, वाकई those are correct. लेकिन आप like you can identify both the things. वो allylic भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. So see, this is going to be 1 degree. This is 1 degree and it is also allylic. This is 1 degree. This is 2 degree and it is allylic. This is 2 degree.
This is 3 degree and it is also allylic. Yeah, correct, Ahmed. Please note this down, guys. Those who have not written yet. Sarah, how are you? Are you fine? आप late हो गए थोड़ा Yes, sir. I had this green Olympiad. What you had? A green Olympiad. It was online. Okay. चलिए. This, all of you done? रजान लिख लिया आपने? Yes, sir. लिख लिया, जोर से बोलिए, मेरा आवाज ही नहीं आती आप लोगों को तो. चलिए. Let me know if you have not written, ठीक है? जोर से. If you have done, let's move on to the next part. Now, let us write the IUPAC nomenclature for the following. Okay. चलिए, please write the IUPAC nomenclature. Samya, no, that is not correct. Please try once again. Yes, Samiha, that is correct.
How many of you are having difficulty? Please tell me. Raise your hand if you are having difficulty in naming this molecule. Okay, send me the work, Ahmed. I hope you know. You have to tell me what is the functional group unsaturation, parent, and the subsequent. Show me whatever you have done till now. So I did something, then erased it. नहीं तो फिर was से wrong, कीजिए फिर और क्या नहीं फिर से Okay, कीजिए like there is no use on One sec. writing with pencil ना ठीक है कीजिए क्लोरो भूल गए आप you forgot chloro फातिमा Yeah, देखिए sorry. numbering is wrong वाफिया Samya you also send me functional group unsaturation, parent and subsequent. You forgot one methyl. दो methyl है. Sarah, there are two methyls. क्लोरो पहले आएगा सी पहले आता है सब भूल गए आप लोग फजान नंबरिंग इज रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप लोग यू गाइस हैव बीन नॉट इन टच विद दिस आईपैक नोमेनक्लेचर आई थिंक प्लीज सी चलिए बोलिए गाइस पेरेंट नॉट पेरेंट माय बैड व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप Alcohol. अल्कोहल तो नहीं है ना अल्कोहल लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं OH. बताइए OH. OH लिखते हैं नाम में क्या OL. लिखते हैं OL in the end. अनसैचुरेशन AN. Sir, AN. पेरेंट Pent. Pen. ठीक है वो तो सब ठीक है लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे we start from the carbon that is nearest to the Near functional to group the if functional not group. then double bond if not then triple bond okay if not then the substituent 1 2 3 4 and 5 carbon atoms so it will be what pent right then substituent now you need to do this actually okay अब यहाँ पे इसको सर्कल कीजिए देखिए we have covered this puff whatever remains is the substituent what remains we have a chloro that is in the fourth position so write 4 chloro then we have two methyl groups in second and third position so 2,3 dimethyl and now we have one substituent which starts with C and the other substituent it starts with M not D D का मतलब सिर्फ number है ठीक है D is not the name of the substituent it is just a number so methyl so C will come first and you are going to write 4 chloro 2,3 dimethyl pentanol या फिर one all लिख लीजिए आप both are fine got this guys इसमें please tell me Yes, sir. ठीक है इन दोनों के इसमें कोई स्पेस नहीं रहता ठीक है ना पेंटानॉल विल स्टार्ट लाइक दिस ओनली यू डोंट हैव एनी स्पेसेस इन बिटवीन खुद से कीजिए फिर इसको कीजिए अच्छा लेट मी एक्सप्लेन दिस वन ओके गाइस लेट मी एक्सप्लेन दिस वन नाउ फंक्शनल ग्रुप व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप टेल मी गाइस इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप हियर इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप हियर Sir, no, sir. no no so it will be E unsaturation
AN. AN, parent. Now we can see that we have this group of carbon atom and this group of carbon atom. Both of these carbon atom are different chain because these are broken in between. Oxygen is connected here, na? So ये दोनों carbon chain एक दूसरे से connected नहीं है. That means these two are different carbon atoms. These two are different carbon chain. Which is larger, the right one or the left one? Which is The larger? left one. Left one. Left. Left only में कितने carbons हमारे पास? 3. So it will be what? Prop. Okay, this will be prop. Now this is your parent. After that you have substituent. And you can number, I can start numbering from here, or the below one is going to be same 1, 2, 3. And what is the substituent? We have oxygen atom and then we have 2 carbon atoms. So this is oxy. Whatever remains after the identification of puff is a substituent, and it is what? 2-ethoxy. So the name is going to be 2-ethoxy propane. Got it? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Now, for this one, this complete structure like this is known as phenol. Okay, and we said that when we have benzene or benzene derivative, it's very easy because we have already figured out the puff. The puff is equal to what? The main fragment here is phenol. And the only thing that is remaining here is the substituent. Okay, the only thing that is remaining is substituent. And what is the substituent? Both of these are methyl. You don't have to worry. You can start numbering from here. 1. Oh, sorry, my bad. This will be 2 because this OH is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So now the substituent is what? 2,6 dimethyl. The name becomes 2,6 dimethyl phenol. Okay. इसका कीजिए आपको. Please try this one. अच्छा ये लिख लीजिए पहले लिख लीजिए आराम से. This is for the ethoxy propane one, and this one is for the phenol one. Okay. चलिए इतना लिख लीजिए. लिख लिया आप लोगों ने. Yes, sir. Yes, sir. चलिए try this one.
Yeah, that is correct, Sanya. उल्टा कर दिया आपने, नंबरिंग सही नहीं है, नंबरिंग पता नहीं आप लोग क्यों नहीं सही कर रहे हैं। रजान प्लीज लुक एट द नंबरिंग, सारा करेक्ट। अहमद नंबरिंग सही नहीं है आपका भी। ओके, इफ यू रिमेंबर हालोल के हालोरीन वाली क्लास में you start the numbering either from the functional group or the double bond or the triple bond or the substituent. So here we have a substituent ना, जो methoxy आप लोगों ने identify किया। You will start the numbering from the carbon atom that is attached to methoxy. फातिमा नहीं हुआ आपका अभी तक? यस फातिमा, आपने वो आप भी उल्टा जा रहे थे है ना? हाँ, फातिमा वाज आल्सो गोइंग द सेम वे। इथाइल है वो, अभी तो बताया ना फातिमा, दिस इज इथॉक्सी, वो भी तो है। सी गाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज इथॉक्सी। इथॉक्सी क्या है? ये मिथॉक्सी है, सॉरी, इथाइल लिखा हुआ है आपने तो। और बात कोई हाँ या ना कुछ बोलेगा, नहीं आ रहा क्या कुछ समझ में किसी को? व्हाट इज दिस? methoxy. फातिमा, फातिमा व्हाट इज Yes, दिस? methoxy. मिथॉक्सी, और ये क्या है? प्रोपेन। ठीक है, इट विल बी व्हाट, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, वन मिथॉक्सी, प्रोपेन। ये तो कहाँ से कर पाइएगा आप लोग? डू दिस वन।
Samya, this seems fine. Yes, Samiha, सही है. Very good. सामिया बोला तो हमने, लुक्स फाइन, सही लग रहा है. अहमद, डबल बॉन्ड का आपने पोजीशन नहीं बताया है. अहमद, यू हैव नॉट गिवन द पोजीशन फॉर द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड कहाँ पे है? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन कहाँ पे है? व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, सारा, फातिमा ने भेजा है फिर. अच्छा, हाँ, दोनों ने वही किया है ना, दोनों ने गलत भेजा, दोनों ने डिलीट कर दिया. वाकिया, फातिमा, बोथ ऑफ देम. या रजान सही है, लेकिन देखिए अनसैचुरेशन में ई एन होगा बस. यू हैव रिटन करेक्टली इन द अनसैचुरेशन, लेकिन नाम लिखने के टाइम आपने गलती कर दी. मिथाइल का आपने बस मिथाइल लिखा है, मिथाइल लिखा है, एल छूट गया आपका. लेटर्स एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय अ डैश. तो 2 ब्रोमो के बाद डैश 3 मिथाइल होगा, ठीक है. उसके बाद ब्यूट डैश 2 डैश ई एन, एंड फिर ई एन और ओल के बीच में कोई डैश नहीं होगा, ठीक है. Okay, sir. So this one is, see, first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, ठीक है. Once you get hold of this ना, like अगर आप लोग, if you are comfortable, you don't need to do all those things, functional group unsaturation parent, ठीक है. Because once you identify यहीं पे, अगर आपको brain अपना capacity रखता है कि आप identify कर ले, then you can just write the parent. Now the parent is done. We have CS3 and Br. CS3 और Br में कौन पहले आता है? Br पहले आता है because starts with B and methyl start with M. So this is in the second position. So 2 bromo, 3 methyl, bute, 2 ene, and you can write 1 ol, or you can just write butene, bute 2 enol. Okay, bute 2 enol. Right for this one. अच्छा चलिए इसको कीजिए पहले, अल्कोहल खत्म कीजिए पहले.
Yeah, that works, Samiha. That's fine. Second में profile नहीं है, but Samiha, it's not profile in the second. Okay, sir. Okay, it's not profile. याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा if you have done this previously. Not profile, we have another name for this. Guys, look here. Functional group is OL. OL, and the unsaturation is E. unsaturation E होता है. Sorry. हाँ, E होता है सर. E. ठीक है. AN है ना, parent. We start from here 1 2. किधर जाएं? राइट जाएं, लेफ्ट जाएं? किधर ज्यादा कार्बन है? Left, sir. Left 3. Should I go downwards or leftwards? Left. 3, 4 and 5. ठीक है, so it is spent. This is a substituent. This is a substituent. Okay, please look. Second carbon में जो substituent है, it is 3 carbon atoms, but it is connected via the second middle carbon. ठीक है, so we have 3 carbon atoms and it is connected via this carbon. This is the point of attachment. इस टाइप का अटैचमेंट को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल. Then this is what? This is chlorometh. ये आपका CH3 अगर होता तो क्या होता? क्लोरोमीथेन होता. CH2 है तो क्या हो जाएगा ये? Chloromethyl. So we have 2 isopropyl, and in third we have chloromethyl. Okay. Now C comes before I. Is going to be 3 chloromethyl, 2 isopropyl, contain 1 O. अच्छा, एक चीज हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे दैट आप लोगों को ना डिलीट करने की जरूरत नहीं है मैसेज. ठीक है ना? अगर आप लोगों ने कुछ गलत आंसर भेजा है तो प्लीज हमको पता रहना चाहिए ना कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं. ये तो सुधार कहाँ से होगा. ओके, सो प्लीज डोंट डिलीट दोज मैसेजेस अगर आपने कुछ गलती भी किया है. और दूसरी चीज हमने एक बार आप लोग को मना किया है कि पेंसिल से कभी मत लिखा कीजिए. 12वीं क्लास में आ गए हैं आप लोग, पेंसिल से लिखते हैं ताकि हम इरेज कर पाए अपने मिस्टेक्स को. ठीक है, दैट्स रियली द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. चाहे आपका कॉपी किताब जितना भी गंदा लगे, नो मैटर व्हाट. ओके, नोट्स आपके लिए है, आपके पढ़ने के लिए. आपको पता रहेगा ना आपने कहीं पे कट किया है तो कि यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ था. दैट मीन्स दिस इज समथिंग दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड इफ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई शुड रिवाइज इट मोस्ट प्रोबेबली. वहीं आपने इरेज किया हुआ कुछ आपको पता नहीं है कि क्या मेरे से गलती होती है, क्या मेरे से गलती नहीं होती है. because notebook is a very personal thing and it should be, सबका notebook अलग रहना चाहिए. In the sense that if I read Fatima's notebook, then it should be having some notes here and there that should be for herself. Similarly, if I read for Sara, so सारा का नोटबुक कुछ और दिखना चाहिए. सारा के कुछ और सवाल गलत होंगे, फातिमा के कुछ और सवाल गलत होंगे, तो गलतियां आपकी नोटबुक में ही रहनी चाहिए. ठीक है, अभी भी हम देखते कि बहुत सारे लोग पेंसिल से ही लिख रहे हैं. ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट. आपका उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगा. ओके, नाउ ट्राई दिस वन. अच्छा, 2 OH है तो क्या लिखते हैं? What will be the functional group if you have 2 OH? What will be the functional group if you have 2 OH? अच्छा, 2 मिथाइल रहता तो क्या लिखते हैं? If in the substituent we have 2 methyl, then what do we write? Dimethyl. Dimethyl. तो यहाँ पे 2 OH है तो क्या लिख देंगे? डाइओल. Diol. ठीक है, उसको नंबरिंग करना होगा यहाँ पे. ठीक है ना, जो भी नंबर आएगा इसका वो नंबरिंग कीजिएगा आप लोग. ओके, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन.
Yes, Samiha, very good, correct. एक मिथाइल छूट गया. You have not written that मिथाइल. See, सारा सवाल नहीं लिखा आपने. ठीक है, लेकिन आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही है. ओके, whatever structure you have made, according to that it is correct, but आपने स्ट्रक्चर ही गलत उतारा है. Yes, Wafia, now it is correct. Very good. Yeah, dimethyl hexanone. Yeah. Waiting for others. Please send the answers. रजान, आप माइक ऑन कीजिए तो. रजान, यू टर्न द माइक ऑन. Yes, sir. हाँ, numbers and numbers are separated by dash. किससे सेपरेट करते हैं बताइए? Numbers and numbers are separated by fill in the blanks. Dash. नहीं भाई, वो डैश है, fill in the blanks. तो आपको कुछ एंटर करना है. Comma. Numbers and numbers are separated by. Comma. आवाज नहीं, जोर से बोलिए. Numbers and numbers are separated by Comma. comma. Very good. आपने क्या कॉमा से सेपरेट किया है 2 और 5 को? No, sir. नहीं, ठीक है. Numbers and letters are separated by. Dash. हाँ, numbers and letters are separated by hyphen. ठीक है, आपने सेपरेट किया उस तरह से. No, sir. और उसके बाद आपको L से क्या परेशानी है? आपको जो अल्फाबेटिकल लेटर है L, उससे क्या परेशानी है? आप मिथाइल को पूरा मिथाइल क्यों नहीं लिखती हैं? मिथाइल लिख के छोड़ दिया आपने. डाई मिथाइल, मिथाइल नहीं, मेथी हो जाएगा ये, पता है आपको. दिस विल बी 2,5 डाई मेथी हेक्स का आपका. ओ माय गॉड. जस्ट अ सेकंड गाइस. हाँ, चलिए एक बात बताइए. Raise your hand if you think this is the letter H.
Raise your hand if you think this is the letter H. Raise your hand if you find no difference in both of these letters. Raise your hand if you find no difference in both of these letters. इस ग्रीन वाले लेटर और इस ब्लू वाला लेटर कितने लोगों को सेम लग रहा है? आपको नहीं लग रहा सेम? रजान, आप क्यों नहीं हाथ उठा रही हैं? हाँ हाँ रजान, आपको सेम नहीं लग रहा है? They look the same. They look the same ना? ठीक है, तो दूसरी बात हम बोल रहे हैं जैसे can you feel me can you sense the frustration here, Razan? Can you sense the frustration here? मतलब आपको लग रहा है ना कि हम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं? Yes or no? Tell me guys. Yes, sir. है ना? आप चाहती हैं आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का जो मतलब जो पेपर चेक कर रहा है वो इस तरह उसका मूड रहे आपका पेपर देखने के बाद? Do you want that? हाँ रजान? Yes, sir. नो ना? ठीक है, हाँ तो साफ साफ लिखा कीजिए. ओके, साफ साफ लिखा कीजिए. इससे इट रियली डज अ लॉट. ओके, बिकॉज वो हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आई स्टार्टेड इनिशियली आई यूज्ड टू चेक पेपर्स फॉर केमिस्ट्री ओनली. ठीक है, व्हेन आई वाज इन माय बैचलर्स, उस टाइम हम जब पढ़ाते नहीं थे कोचिंग में, तो हम उस टाइम पेपर चेक करते थे. आदमी स्टार्टिंग छोटे से स्टार्ट करता, राइट? आई चेक्ड, आई यूज्ड टू चेक अ लॉट ऑफ पेपर्स. ठीक है, and that made me realize कि okay fine, handwriting does matter. and उससे क्या हुआ, फिर day by day I used to work on my handwriting at least in the examination, कि उनको पता है कि वो टीचर क्या फील करने वाला है if I'm going to write rubbishly in the exam. okay, please work on it. ठीक है, please work on it. मतलब ये तो कट ही जाएगा. और दूसरी चीज आई पैक नॉर्मल, ये गलत है. भले ही आपको पता है सब कुछ, एक तो यहाँ पे खैर एल मिसिंग है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज स्टिल रॉन्ग. व्हाई? कॉमा नहीं है यहाँ पे, डैश नहीं है यहाँ पे, देयर इज अ स्पेस हियर, देयर इज अ स्पेस हियर. ठीक है, देयर इज अ स्पेस हियर, देयर इज अगेन अ स्पेस हियर, यहाँ पे कॉमा नहीं है. ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर. द वे टू राइट दिस वन विल बी 2,5 dimethyl now hexane is also with dimethyl. Hexane 1,3 diol. okay, so letters के बीच में कोई spaces नहीं होता है. Numbers and letters, these are differentiated by a hyphen or a dash. Numbers and numbers are differentiated by a comma. okay, चलिए, I think ये सारी सब का सही हो रहा है. Let me change this again. yeah, what will be this guys, tell me. अब थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ना कि आप लोग को वो पफ और सब्स्टिट्यूएंट ना लिखना पड़े अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सबसे तो. ठीक है, Yes, तो sir. स्टार्ट हियर 1 2 3 third 3 4 5 and 6. so obviously it is what, we'll start with the substituent. What is the substituent? Bromine. so it will be 3 bromo. okay, then comes what, substituent के बाद क्या आता है? पेरेंट आता है. X. सामिया आप थोड़ा हड़बड़ा गई. Phenol. फेनॉल नहीं है, बेंजीन रिंग रहेगा तब ना फेनॉल होगा सारा. 3 bromo Okay. will be hexane 1 ol. सबको दिख गया? ऐसा नो चल में Yes, sir. यहाँ पे देखिए, बताइए यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें? किधर से स्टार्ट करें नंबरिंग? बताइए, ए या बी? वेयर शुड आई स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम? जोर से A. बोलिए. ए. 1 2 3 4 5 and 6. okay, and is there any substituent? There is no substituent, so it will be starting from parent. parent क्या आपका? अरे भाई एक सेकंड, ये हमने गलत लिखा है, माय बैड. दिस विल बी साइक्लोहेक्सेन 1 ol. हेक्सेन लिख के छोड़ दिया हमने. 3 bromo साइक्लोहेक्सेन 1 ol. ओके, ये क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज स्टार्ट फ्रॉम हेक्स, अदर इज इन, फर्स्ट कार्बन में.
1 ene, and what ol? 3 ol. Hex 1 ene 3 ol. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ओके, चलिए अब आप देखिए ये सवाल सर A and B, which is going to be the parent? Tell me. B. B will be A. parent. A will be parent. अरे कौन होगा parent? B. B will be parent, है ना, ज्यादा कार्बन है वहां पे. Okay, so what is this? ये है आपके पास 1 2 3, right? There are 3 carbon atoms and there is a substituent also. What is this whole thing then? Tell me. Propanol. प्रोपेनॉल OH है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है. इसके लिए आपको ये कीजिए, आपको फंक्शनल ग्रुप Propane. रुक जाइए. Functional group is En, unsaturation is functional group is just E, unsaturation is An, parent is what? Prop, and this prop has एक substituent ये है आपका, दूसरा substituent ये है. Substituents are there is ethoxy 1 2 3, so there is 1 ethoxy and there is 2 methyl, है ना. नाम क्या हो जाएगा? E पहले आता ना, 1 ethoxy 2 methyl Propane. propane. Okay. एक और आपको, हाँ, what will be this? ये आपके पास क्या है? There is OC2H5. That means this is what? This is ethoxy. इसके ऊपर लगा हुआ benzene. So this will be ethoxy benzene. ठीक है? Then we have this one. Now, first of all, this is going to be your parent. ठीक है? This carbon, this whole group will be your parent. This is your parent. This is one substituent, another substituent, another substituent. ठीक है? So these two substituents are what? Dimethyl. हाँ, ये substituent क्या है आपके पास? Ethoxy. Okay. Obviously, we will start from dimethyl because यहाँ पे 2 methyl. So we'll start from 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now we have in the 4th carbon we have ethoxy. 4 ethoxy. 1, 1 dimethyl. इसका मतलब दोनों methyl groups first carbon में लगे हैं. Dimethyl, and what do we have? 6 carbon atoms. So it will be what? Cyclohexane. 4 ethoxy, 1, 1 dimethyl cyclohexane. All of you doing yes or no? Please tell me. So 1 minute, please. Okay. Done, sir. Thank you. Then okay. Now please write.
classification of alcohols. Okay, on the basis of how many OH group it contains, it is classified as, please write, alcohols are classified as monohydric. Monohydric means contains one OH group. देखिए डायरेक्ट सवाल ना इन सब चीजों से नहीं आता है कि आपको यहाँ पे दे दिया आइडेंटिफाई कि ये मोनोहाइड्रिक है डाईहाइड्रिक क्या है, लेकिन लैंग्वेज आपको आना चाहिए किसी भी चीज का पढ़ रहे हो तो. सो दीस आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ दिस चैप्टर अल्कोहल्स. ओके, इस तरह से एनाइल आपको पता होना चाहिए. आपको कभी ये सवाल नहीं आएगा जो हम कराते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए बोर्ड्स के एग्जाम में, लेकिन वो जानना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है. ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू नो इन ऑर्डर टू डू द अदर क्वेश्चंस. Monohydric, then write dihydric, contains 2 OH group. Trihydric contains 3 OH group. फोर्थ में लिखिए पॉलीहाइड्रिक contains, you can write more than 3 or multiple hydric group, OH group. Okay, more than 3 OH groups. सवाल इस तरह से आता है कि लाइक अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्ट्स विद दिस, इट फॉर्म्स दिस. तो आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या होता है, मोनोहाइड्रिक क्या होता है. ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट अल्कोहल्स. ठीक है, एक तो आपका बिल्कुल सस्ता सा अल्कोहल है जिसको इथेनॉल बोलते हैं. इथेनॉल आप लोग के लिए इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज होता है. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 OH, और यू कैन राइट जस्ट एज 1 carbon 2 carbon OH. ठीक है, देन वी हैव अनदर व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो भूल जाइएगा आप लोग, दैट इज ग्लाइकॉल. ग्लाइकॉल इज नॉट CH2 with OH, another CH2 with OH, or you can also see the structure in this form, OH इधर OH इधर. ठीक है, right, next there is glycerol. CH2OH, another carbon with OH, another carbon with OH. ठीक है, दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, OH OH and OH. So 1 2 3 कार्बन ही हैं यहाँ पे, 3 कार्बन एंड 3 OH. और कुछ लोग ना पागल हो जाते हैं बिल्कुल, इसको बोलते हैं सर ये भी एक कार्बन है क्या, नहीं है वो कार्बन. ओके, दिस इज अ बॉन्ड दैट इज एंडिंग अप विद OH. राइट, नेक्स्ट alditol, ALDITOL. इसमें बस एक कार्बन और आ जाता है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं CH2OH. there is CHOH how many times, 4 times. Okay, and then we have CH2OH. This is alditol. alditol क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर होता है उसमें भी 6 कार्बन होते हैं. ओके, सो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में और आपको एक एल्डोज है, दैट मींस इट इज कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप. यहाँ पे उसके एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में.
That is the only difference. और यहाँ पे this OH, that is why it is alditol. लिख लिया आप लोगों ने isonopycil में? All of you wrote this? Yes, sir. Now right next, cresols. Cresol क्या होता है? Phenol with one CH3 group. Phenol with one CH3 group. You can have three types of cresol. Phenol. This is what? This is O-cresol. That means orthocresol. Then you can have M-cresol. And you can also have P-cresol. Write some important dihydric phenols. This is known as catechol. What is in the meta position, that is known as resorcinol. If the OHs are in the para position, it is known as hydroquinone. It is also known as quinol. So what is the other name? हाइड्रोक्विनोन हम दिखा दे रहे हैं आपको, और हाइड्रोक्विनोन. हाइड्रोक्विनोन किस चीज के लिए यूज होता है? Does anyone know? नहीं, पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा हाइड्रोक्विनोन किस चीज का इस्तेमाल होता है. ओके, now write an important note. This is something जो ना reactions पे आपको इस्तेमाल होगा. Please write more than one OH group. More than one OH group cannot be present in one carbon atom. In one carbon atom, as the molecule gets very unstable. It gets very unstable because it is having two very highly electronegative element, that is OH groups attached to it. Okay, so for example, if you have this CH3 carbon, एक OH group यहाँ पे, दूसरा OH group यहाँ पे, and it has just one hydrogen atom attached, right? If you have something like this, then what is going to happen? Water will leave
from here, one OH and hydrogen, it will leave. Actually होता ही है, देखिए please see. I mean, it is why it is very unstable. This hydrogen will get delta positive. ठीक है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर, सिमिलरली ये ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे लोन पेयर है. अब यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर को क्या दिख रहा है? It is seeing that there is an electron deficient site here. There is somewhere I can keep the electron. So it attacks like this. It leads to formation of, now oxygen is giving the electron to hydrogen. So hydrogen does not need these electrons. It shifts the bond here and you get CH3 carbon double bond O. ठीक है, और यहाँ पे आपको जैसे ये बनता है ना, देखिए ये वाला बॉन्ड पे ब्रेक होगा, because it has now कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है. जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ऐसे लगेगा, ये वाला बॉन्ड इधर से टूट जाएगा. ठीक है, so this is the first thing that is happening. Oxygen is attacking the hydrogen. Secondly, hydrogen is giving the electron to here. Thirdly, what is happening? This bond is breaking because carbon cannot form 5 bonds. आपको यहाँ पे क्या मिल गया? You got aldehyde. है ना, ये देखिए किसका स्ट्रक्चर है? aldehyde का स्ट्रक्चर है, CH3CHO. Okay, right. Next, similar thing happens when you have, instead of hydrogen, you have some R alkyl group, OH here and OH here. Same water will be removed and you will be getting CH3 carbon with a double bond O and R, that is a ketone. वही जब आपके पास 3 OH ग्रुप्स हो जाते हैं, then again water leaves and you get a carboxylic acid, CH3 double bond O and OH. All of it done, guys? Please tell me. Yes, sir. अच्छा, एक और चीज आप लोगों को पता है, एक सनसाइन होता है, क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? जेमिनी बोलते हैं, जेमिनाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? किसी को नहीं पता? ऐसे मक्कार लोग हैं बिल्कुल आप, किसी को नहीं पता ये क्या होता है? It's Gemini. जेमिनाई. क्या सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल क्या होता है पता है किसी को? No one knows. No one knows. Really? ट्विंस होता है ना इसमें, राइट? तो वही जेम का मतलब शायद ट्विन होता है, उसी से जेमिनाई आए हैं. एंड उसी से if you have a carbon atom that is containing 2 OH group, then these are known as gem diol. What are these known as? Gem diol. And whenever you get gem diol, water निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा. Okay, if you have gem diol and there's a hydrogen, you will get aldehyde. Here also you have gem diol, you're going to get ketone. इसका कुछ specific नाम नहीं है. Okay, तो यहाँ पे लिख लीजिए gem diol compound in which a carbon contains two OH groups. ठीक है, चलिए. That's it for today, guys. Okay. Next class में आप लोगों को कुछ असाइनमेंट मिलेगा जिससे आप लोगों को क्या करना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला होगा. You have to do that.
And then we'll start with the method of preparation of alcohols. Okay, we'll start with method of preparation of alcohols. Thank you guys. Thank you very much. We'll meet on Monday now.